So hey guys, welcome back to my channel. Hey, myself Gagan Nishram. I am here to take the podcast of the Nishi Agrawal ma'am. About in the podcast, we will be discussing how she cracked the Goldman Sachs. Also, as she is working at the software as a software developer at the BNY Mellon. So we will be discussing all about the work cultures and her experiences in the BNY Mellon. Also, the experiences at the Goldman Sachs, how she prepared the DSA and how we are her rounds on the DSA. So let's meet her guys and know all about her, how she prepared for the internships and the placements. So let's start. So hi ma'am, can you please give your introduction? Yeah, so I'm Nishi Agrawal. I just recently graduated from NIT Trichy. I belong to Jhansi in UP, and currently I'm working as a software development engineer in BNY Mellon. My role is like a backend developer, which focuses on databases and APIs. And Yeah. before this, I've worked as a summer analyst in Goldman Sachs, and I've also worked as an intern for a duration of 5 months in Front Page, which is a startup, and it is the number one paper trading company, yeah, in India. क्या आप अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में बता सकते हैं मीन्स फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड और फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. So I did a little bit of questions in first year, maybe one or two hackathons or contests or something like that. But I properly started in my vacation period in the first year. In my college, what happens is we have these programming clubs. We have clubs for everything, and the selection process is very rigorous. So I prepared for about 4 or 5 months to get into it. So for that, I first learned basic HTML, CSS, and JS to make simple games. Then I made a canvas game, which basically you can play in mobile, something like that for PC. Then I made a full-fledged web application for that, and I did not get selected. I was in top 40 students among 600 applicants. And then I got my first internship unpaid through an alumni in a startup. I did that for 3 months, and in that, my real learning happened. Like I learned a lot of Node.js, a lot of React. I learned a lot. After that, I again applied for this club. Then I got a task to make Google Docs ka clone in 24 hours, which I made in 13 hours. So I Wow. got selected. And then once I got selected in this, I made a project for my college, which is basically like how you sign in through Google. If you go to some application, they give like sign in through Google option, right? I made something similar for Yeah. my college, which is sign in through DAuth. So everyone in my college, every website currently uses DAuth. So everyone who is in NIT Trichy is using my application, which is basically a OAuth 2 server, which helps them a third party sign in. So here you don't have to compromise your webmail ID and password. So we made it because of that. So now you have a DAuth where you need just your OTP from webmail. So it's basically very safe now. So that was my first good project. After that, I got selected for Goldman Sachs, for which I had prepared about 1 month DSA. And again, I prepared some basic CS fundamentals for that, and I had good projects on my resume, so I got shortlisted. After that, placement season started. My PPO results weren't out, and I again was preparing. So companies came, and I was brushing up. Actually, I did DSA for quite long. I did DSA from October again after getting offer from GS in August. I started DSA again in October, and I did it till March next year. And between that duration, I was doing two more internships. One was in a startup in US, and one was a project, freelance project. So then I once I was very good at DSA, I joined GS. At that time, I was invited for like I was reached out for this role, software role in Google as well. So I again started preparing for that.
And my DSA was brushed up, and then BNY came to our campus, and it was a second or third company. So they only Okay. asked DSA questions mainly. So yeah, got that. Okay. And from where you started the DSA from second year, no? After the internships. Yeah, yeah. I started in the second year ka start. No, mid second year Second ka year mid. start. From the end of third year, third semester. Sorry. हाँ. Okay. And मीन्स हम जब डीएसए करते हैं देन कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं जैसे मैंने भी चालू किया था देन मीन्स आई हैड स्टॉप द एट द रिकर्जन बिकॉज मेरा रिकर्जन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था सो आपके कोई मुझे भी नहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहा इन द था. डीएसए मुझे अभी भी नहीं आता है कभी कभी. So what I do for that is I have some good friends who will come in Google Meet and they will use that Google whiteboard and they will be like ये देखो ये 2 का पावर n जा रहा है ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है. I'm very bad at maths. अभी भी तुम मुझे बोलोगे तो I might not be able to explain full recursion, but as a concept you will have so many videos, so many resources and so many examples to understand कि recursion actually काम कैसे करता है. If you scroll through LinkedIn, people are sharing very good resources to explain simple concepts. तो मेरा क्या था honestly what I will do is एक question like I have a sheet of DSA. So what I will do is there are some around 300 questions I think in that. We had to solve all of it before our internship or at least placements. So I was doing that. If I see a question, what I will do is I will go to that question ka Google, Geeks for Geeks ka link. Then I will read the question and I will try on pen and paper. एंड माई अप्रोच इज मोस्टली लाइक लेट अस से कि हमें एक वैल्यू 2 मिली है तो हम इसमें क्या करेंगे या एक वैल्यू 10 मिली है तो मैं इसको एज अ ह्यूमन माइंड कैसे सोचती हूँ. देन आई ट्राई टू कोड दैट थिंग एंड देन आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है डीपी का हो सकता है या ये रिकर्जन का हो सकता है या ये ट्री का हो सकता है. तो आई थिंक अबाउट दैट लेटर. फर्स्ट आई विल थिंक एज अ ह्यूमन हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट, हाउ आई वुड गो थ्रू इट. Once I do it on pen and paper, then I check with Geeks for Geeks itself कि what is the correct method. I check कि गलती कहाँ हुई. After doing that, I go to lead code, search for the same question or similar question and code that and pass the test cases. Why I'm suggesting lead code is that and not Geeks for Geeks to try is lead code I felt personally कि has very good edge cases and test cases and there are like 200, 300 test cases and you might fail at like 190th, but the 10 cases, test cases at the end will not pass. And you will learn a lot in the 10 test cases. या द सेम प्रॉब्लम So केम विद मी आल्सो या सो जो टीएलई का एरर आता है ना बाद में या जो एक आध केस में कुछ तो एक्सेप्शन आ रहा है कहीं तो फेल हो रहा है तो समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है. तो मुझे लीड कोड काफी सही लगता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट केसेस. सो फॉर आईडी आई सजेस्ट लीड कोड, फॉर एक्सप्लेनेशन आई सजेस्ट गीक फॉर गिग्स एंड फॉर वीडियोस आई गो फॉर यूट्यूब. आई डोंट प्रेफर गिग्स फॉर गिग्स वीडियोस अ लॉट. आई गो फॉर यूट्यूब. एंड डिड यू फॉलोड एनी शीट मीन्स अभी तो करंटली चल रही बिकॉज अभी स्ट्राइवर शीट स्ट्राइव ए टू जेड शीट और आपको मालूम होगा फ्रास के भी आ रहे शीट्स एंड फ्रास यू नो व्हाट द एक्चुअली फ्रास बहुत शीट इज सारे वर्किंग एट शीट्स हैं ऐसे लाइक सीएससीएस है ऐसे बहुत सारे हैं. बट मेरे कॉलेज में एक शीट थी जो हमारे सारे सीनियर सजेस्ट किए थे तो मैंने वही यूज किया. इफ यू वांट आई कैन शेयर विथ यू आफ्टर दिस. और उसके अलावा मैंने थोड़े क्वेश्चन सीएससीएस से भी किए हैं. बाकी हाँ मैंने इतना ही किया है. बाकी मेरा था कि जो लीड कोड पे डेली क्वेश्चन होता था दैट आई विल सॉल्व एवरी डे. आई सॉल्व दैट फॉर लाइक 1 year आई थिंक मोर देन मे बी दैट. ऑल्सो उसमें जो दो कॉन्टेस्ट होते थे एक वीकली और एक बाई वीकली. So I and my friends used to give that like it is at 7:30 a.m. you have to wake up and हमारा मैथ्स का टाइमिंग भी 7 बजे रहता था. और फिर वो क्विज कॉन्टेस्ट के पहले मैथ्स बंद हो जाएगा तो हमें जाके खा के आना होता था तो जल्दी उठते थे 6:30 बजे. पर वो देते थे. इफ यू मेक इट अ रूटीन यू कैन डू इट. ओके ओके एंड इन द academics which technologies you explored In what you are asking web development. about yeah about domains web or apps or there Okay, are okay. different ways of So working. yeah, so there are three main domains, four more main domains actually, according to me. One will be like web development, one is app development, third is this thing, ML, AI and all. Fourth is this gaming and all. And fifth, which we do not think that it is a domain, but it is DevOps.
ओके सो अभी ये सारी चीजें हैं यू कैन आइदर गो फॉर साइबर सिक्योरिटी डेवॉप्स एंड ऑल उसका थोड़ा कम स्कोप है बट दे आर हाईली पेड इन आवर कंट्री मतलब डेवॉप्स का बहुत वो रहता है बट इवन इफ दे टेक लाइक ओवर 20 डेवलपर्स दे माइट टेक वन डेवॉप्स पर्सन बट दे विल पे अ लॉट टू दैट डेवॉप्स पर्सन वो चीज है अकॉर्डिंग टू मी आई सी दिस इन द इंडस्ट्री और दूसरा चीज क्या है कि वेब डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है ऐप का भी है बट ऐप में आई फेल्ट कि लोग मुझे यही बताए कि चीजें स्टेगनेंट हो जाती है कुछ टाइम के बाद इट्स द सेम थिंग विच यू कीप डूइंग और मैंने स्टार्ट ही वेब डेव से किया था तो आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड ऐप डेव ऑन माय ओन और मशीन लर्निंग एआई का तो अभी तक अभी चल ही रहा है आजकल स्कोप तो I would suggest you can either go for that as well. And if you go for machine learning and AI, you might get research opportunities as well, which were not very much open for me. I felt, but हाँ, web development में opportunities हमेशा ही रही हैं, तो I went with that only mostly. And if you're going And for what that, do you I think? can tell. See, if you're going for some technology for web, I would suggest start with Learn. Like learn one full stack. For that, you should learn one front end ka pura, like Svelte or Svelte or React or something. Go with some backend like Flask or Django or Node or something. So be a full stack developer first. If you're going with app, learn something like Flutter or this Java or something like some proper Spring Boot or something. And if you're going for ML, AI and all, then Python is good. But for DSA, I would suggest that go with C++ or Java only, preferably C++. Hmm. Okay. बट मीन्स अभी तो मेरे को मीन्स अभी तो करंटली ये चल रहा है कि चैट जीपीटी विल रिप्लेस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि चैट जीपीटी रियली रिप्लेस द वेब डेवलपर्स और व्हाट डू यू थिंक See, अबाउट honestly, इट? I'll tell you one thing. For me, if I want to, let's say, design an art, okay. For me, Chat GPT, like AI is developing me that art. AI is providing me the description of that art. It is doing everything. बट एट समटाइम्स नो लाइक सी दो तीन बातें हैं अगर एआई इतना कुछ कर रहा है तो हमें पता चल गया कि अब इतना स्कोप है एआई का तो उसको हमें बेटर डेवलप करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए आई फील कि उसको लीड करने के लिए उसको कुछ तो करने के लिए मतलब ह्यूमंस की तो जरूरत रहने ही वाली है ठीक है ट्यून हो सकता है कि लोगों की वो कम हो जाए मतलब जो अभी जैसे कंटेंट डेवलपर है पोएट्री राइटिंग है ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगी आर्ट आई फील कि हमारा बार इंक्रीज होगा हम रिप्लेस नहीं होंगे वी ऑल्सो हैव टू इंक्रीज बार लाइक अभी जो स्किल्स की जरूरत है ना वो थोड़ी अपग्रेडेड स्किल्स की जरूरत होगी बट इवन विद चैट जीपीटी आई थिंक पीपल विल स्टिल बी नीडेड एंड नए रोल्स क्रिएट होंगे डिफरेंट रोल्स क्रिएट होंगे अभी जैसे तुम चैट जीपीटी से बोलो कि डिजाइन अ वेब पेज इट विल क्रिएट दैट लॉजिक फॉर यू बट इट कांट डिजाइन इट विल नॉट राइट सीएसएस इट कांट राइट इट हैज लॉट ऑफ सीएसएस का इट इज अ टेक्स्ट वाला सिस्टम तो मुझे लगता है कि एआई कैन नॉट थिंक लाइक अस इट हैज ऑल द डेटा बट इट कैन नॉट थिंक लाइक दैट सो वो चीज रहेगी तो देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ऐसा रोल है जिसमें वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता Yeah, okay. And currently the students are joining at the first year and क्या बता सकते मीन्स फर्स्ट ईयर में इफ द स्टूडेंट्स आर इन फर्स्ट ईयर सो उनको क्या क्या करना चाहिए मीन्स if फ्रॉम वेयर the दे शुड students are in स्टार्ट. a first year so they should do this thing. Don't just go into coding blindly. I would suggest take time, decide किस में जाना है, क्या अच्छा लग रहा है. When I was in first year, I went robotics की workshop, electrical की workshop, coding के लिए, I went ये painting वगैरह के लिए हर चीज के लिए मैं गई. मैंने सब कुछ देखा, फाइनेंस देखा, मैथ्स देखा, सब कुछ देखा. ऑनेस्टली मेरा तो कुछ एम था ही नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का आई डिड नॉट लाइक एट ऑल आई वांटेड टू गो फॉर दिस थिंग आइदर यूपीएससी और एटलीस्ट प्रॉपर कोर इंजीनियर ओके बट आई वेंट टू द वर्कशॉप मुझे नहीं आ रही थी सी समझ में मुझसे नहीं समझ आ रहा था कि सर्किट्स कैसे ज्वाइन होंगे और व्हेन आई वेंट फॉर दिस हैकाथॉन अचानक से अच्छा आ गया उसमें क्या टॉप पे चल रहा है इसका टीम तो मुझे मजा आ रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे लग रहा था कि कोडिंग सो बोरिंग बट देन व्हेन आई वाज सॉल्विंग स्टिल व्हेन आई डू समथिंग एंड इट शो सक्सेस या कुछ अच्छे काम करना आई स्टिल गेट दैट किक व्हिच आई गॉट फर्स्ट टाइम तो तुम्हें अगर वैसा किक मिल रहा है किस चीज में डू दैट प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेरी फ्रेंड है शी डिड कोडिंग फॉर 3 years नाउ शी इज वरीड कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड शी वांट्स टू स्विच फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट पहले से ही कर लेती
I feel you can go for finance, which no one can replace, or I think you can go for this also, product management also. You can explore. So if you want to get, there are so nice jobs in that as well. पहले सोचो क्या अच्छा लग रहा है, सब कुछ एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर में. देन डोंट वेस्ट योर फर्स्ट ईयर का हॉलीडेज. पहले से अभी से एक्सप्लोर कर लो. डोंट बी लाइक हमें 1.5 साल हो गया एक्सप्लोर करते करते, अभी हमें समझ आ रहा है तो थोड़ा लेट हो जाएगा. यू कैन स्टिल मेक इट बट इट विल बी अ लिटिल बिट लेट. सो आई वुड सजेस्ट कि अभी जाओ, एक्सप्लोर करो, और फिर छुट्टियां जो मिले उसमें उस चीज को डेवलप करो. दैट विल बी गुड स्टार्ट. या फर्स्ट ईयर में तो मीन्स मैक्सिमम लोग चिल ही करते हैं मीन्स एज अ आफ्टर स्टडिंग द जेई और मीन्स फर्स्ट फर्स्ट होता है फर्स्ट ईयर सी आई टेल यू, जस्ट मेरे कुछ आफ्टर ऐसे स्टडिंग. फ्रेंड्स हैं हु वर नॉट इनटू सॉफ्टवेयर एंड ऑल, और वो थर्ड ईयर में स्टार्ट किए, तभी भी दे आर प्लेस्ड इन गुड कंपनीज एंड एवरीथिंग. You need 2 months of proper dedication in whatever you like doing. The 2 months is enough. But then, if you do it earlier, it will just be a good start for you. It will be more comfortable for you. Like बाद में तुम्हें ही टेंशन नहीं होगा. तो इसीलिए पहले से डिसाइड कर लो, क्योंकि इफ यू डोंट लाइक डूइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग इट, देन वो तुम्हारा बस प्रोफेशनली तुम कर रहे हो उसे, बट मन नहीं लग रहा है उसमें. यू कैन नॉट पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट. So I was asking about your coding rounds मीन्स आपके कितने राउंड्स हुए थे at the Goldman Sachs. हाँ, तो first was OT, then there was resume shortlisting, and then there were three three interviews. Yeah. So first OT में we had a difficult question and two normal coding questions like medium, easy to medium level. एक तो कुछ प्राइम नंबर का था which I was not able to solve at all. एक था कुछ easy सा which I was able to solve. कुछ तो था numbers का ही. I think उसमें आंसर yes and no में था. गेम का कुछ था तो I was able to solve. Then एक एक एडवांस में कुछ अच्छा क्वेश्चन आया था. देयर वाज अ ग्रिड ऑफ अल्फाबेट्स एंड यू हैव टू यू आर गिवन अ डिक्शनरी, यू हैव टू फाइंड इफ दैट वर्ड एग्जिस्ट इन दैट ग्रिड. तो उसमें ऐसा था कि या तो हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा. इवन इट कैन बी इन एल शेप्ड डायगनली और इन अ राउंड रोटेटेड वे, के मतलब आधा इधर आधा इस तरफ से. तो देर वर अ लॉट ऑफ वेज टू फाइंड दैट वर्ड. तो वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था. आई सॉल्व सम 40% ऑफ इट. तो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड. उसमें पीएनसी भी था मैथ्स का, और उसमें एप्टीट्यूड भी था, राउंड टेबल के कुछ क्वेश्चंस वगैरह. उसमें इंग्लिश के दो क्वेश्चंस थे. क्या क्या था उसमें, और क्या सेक्शंस थे, यही थे आई थिंक, और एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स का था. हाँ, तो ये सारे सेक्शंस थे ओटी में. आई थिंक वी वर गिवन 2.5 to 3 hours to solve this. फिर वंस वी डिड दिस वन एंड एवरी सेक्शन वाज सेपरेटली टाइम्ड, कि जो दो मीडियम क्वेश्चंस हैं उसके लिए तुम्हें 30 मिनट्स मिले, तुम्हें 30 मिनट्स ही मिले, और 45 मिनट्स मिले एडवांस वाले क्वेश्चन के लिए, तो तुम्हें उसे 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है. सो व्हाट स्ट्रेटजी आई यूज्ड वाज, जो सेक्शन जैसे 45 मिनट्स के लिए, आई वेंट, read the question, came to the English वाला round, English वाला जल्दी करके solve that question जितना भी time बचा है उसमें. Then again I went to some maths का round, I solved that maths question जो time बचा है, फिर I used for that coding question. Then in the 45 minutes I used it to code only, to code and debug. So that is how I cleared CS का OT. The resume shortlisting. So I already had in mind that I'll keep a good CGPA, I'll maintain a good CGPA. So I think somewhere it helped me as well in resume shortlisting. Plus, I had cleared OT like with okay questions, I think. So that was there. So I got shortlisted from resume also to the interview. Now, once I got interview ka shortlist, it was 3 a.m. at night when I got the list on WhatsApp, and my interview was at 6:30 or 7 a.m. So I did not sleep. I was preparing, and then my first interview happened at 8 a.m. or something, and they saw that I was in the chess team of the college, so they asked me nth queen's question. Okay, how we can place 8 queens such that they will all be safe, something like that. That is there on Geeks for Geeks. It's a traditional standard question. It is. They asked me that. I was kind of blank in that question in that time because I had not slept and I was anxious. And this was the first company I was applying for. Like till now, have not given any company ke interviews. So I was kind of blank, but I did brute force approach to solve it. It was a DP question.
But then they gave me one or two probability question. I clearly told them that I don't know probability very good, very nicely, and I had not prepared also. So they helped me through it. But what I did was from first interview till the third interview, whatever they taught me during interview, I used that itself to come up with answers, and I solved all the questions using their help. So in first interview, he teaches me how to solve probability question. I take his help. I use it in first interview. I use it in second interview. In second interview, he teaches me how to use bias theorem and this and that. I use in that interview also and in the third interview also. They asked me some Fibonacci question and some more questions they asked. But apart from that, mostly they asked probability and maths and all because my role was quant analyst. So and then I got shortlisted for this internship. And this was the first company I sat for, so I had not prepared a lot. It just came in the start of August, and I started preparing the start of July only. So it was just 1 month of preparation for DSA. Like I did a bit of DSA every day, but proper preparation I've done for 1 month only. So that was there. After that, I started doing, as I said, DSA in October, November, right? So what I did is every day I would sit at 11 o'clock at night and I'd randomly choose two questions or three questions and we'll do till 1 o'clock. I and Okay. my friends. So we what we will do is we'll pick a topic, we'll pick one or two questions, we'll solve. We will be on mute and meeting or something, and we'll solve, and then we will discuss. We'll use whiteboard and everything. And we used to prepare because we both were thinking of going off campus. I did not want to, like I wanted to work in a better product company basically. So that's why I was preparing for off campus. Okay. And that friends also wanted a better opportunity. So we were preparing. So we prepared like that till March every day. And then for this company as well, uh, what happened is OT round, they asked two graph questions. One was some puzzle like coding questions, all four coding questions. One was some puzzle like coding question, and one was some traditional question. Not a traditional question. I don't remember exactly the fourth question. So one was multi-source BFS, one was a DFS question, and one was something like DP, but mm, not very deep concept of DP, something like that. So I solved four questions were there. No, I solved 3.5 of these. Like one question, only two test cases were not passing. Like I passed 8 out of 10 test cases, something like that. So 3.5 I had solved. So my name was on the fourth of in my college, like for this OT. So in that order only we were interviewed. Like all four of us got the first interview round, five of us. So I was interviewed by a very senior person who had some 25, 26 years of experience. And he gave me, now since placements has happened just 1 year ago, so I remember the question. They asked me if there is a big matrix, पूरा एक बड़ा मैट्रिक्स है एक छोटा मैट्रिक्स है. Now ऐसा है समझ लो कि एक बड़ा फोटो है तुम्हारे पास ये फेस है ये फोटो है you have to search कि if this face exists in this photo or not. So you have a छोटा matrix, you have to search if this matrix exists in the big matrix or not. और अगर वो फेस, now I solved this question somehow. I solved. Then he says कि अगर ये फेस मैं rotate कर दूं, then how will you search? So basically you have to rotate that matrix and check if it is there. Easy only. थोड़ा सा change किया. Now he asks, you have to count how many times that face exists. मतलब twins हुए तो उस फोटो में. तो फिर I solved वो वाला part भी. So this was a one question that was asked. ये एक क्वेश्चन था. फिर he asked me about my internship, my resume, my projects and all. Second interview was fully on databases, uh, computer fundamentals, basically. So he asked me a lot about queries, SQL queries, joins, how backend, like basic backend questions, and some system design questions also. And I had a little bit of knowledge also at that time because we are final years, so we will expect good questions. So I was answering. And then I felt that interview ended pretty well because he saw that in my skill set, I had worked on two to three databases, some backend, one or two technologies, and two to three front end technologies. So he knew that I had good knowledge.
So that ended well pretty quickly. Now HR round lasted for 1.5 hours, and he asked about everything. He was a very senior position employee. I think he also had some 30 plus years of experience in BNY. And he asked me about the village I had studied in my childhood and about my schooling, why I wanted to join, how I have prepared for this and all, everything. So 1.5 hours. And then I got shortlisted for this as well. So yeah, that was, but yeah, BNY was a campus hiring. So there, I think 11 boys and one girl. But Code Divas is primarily for girls. So I think that would be comparatively easier to get. But obviously, the competition would be a lot. They selected 100 girls from Code Diva in our country, and yeah, campus hire. I was the only one among girls. Okay, among the 10 boys and only the one girl. हाँ बट देन कोड Yeah, डिवा means से बहुत सारी there लड़कियां were हैं तो 30 employees. Okay, हाँ okay, okay. And आप बता सकते हैं means, how was the means work culture of the Goldman Sachs जब आपने internship की? See, my internship was very good. मैंने बहुत enjoy किया है Goldman में and people were very helping and I learned a lot about business, a lot about tactics like investment, banks कैसे काम करते हैं, business language क्या होती है, अच्छी presentation कैसे बनानी चाहिए और कैसे deliver करनी चाहिए, how to cope up with pressure also. मतलब उतना pressure नहीं था but I saw कि हाँ मतलब working hours will be according to US so you have to work till late hours or like in Goldman it all boils down to the team. तो मोस्टली ऐसा क्या होता है कि किसी किसी टीम्स के में कोडिंग का वर्क है किसी किसी में उतना नहीं है बिजनेस रिलेटेड वर्क ज्यादा है in my team there was more of a business related work so I was using technology but I was working more on business intuitions तो मेरा काफी काम एक्सेल पे भी था एमएस एक्सेल पे आई यूज ये डेटा ब्रेक्स पाइथन एंड एसक्यूएल एंड एवरीथिंग बट बहुत सारा काम एक्सेल पे भी था so that was about it. If someone is into finance and they don't like coding a lot and they want to delve more into business and all, I would suggest Goldman is a very good company. It would help you a lot in growth, like in development, in your personal development, and it has a lot of good opportunities. Okay, you'll have a good time at Goldman. एंड मेरा ऐसा था कि मुझे थोड़ा प्रोडक्ट वाला कंपनी चाहिए था कोडिंग वाला when I came back, I felt कि everyone had worked on GitHub, everyone had worked on open source या ऐसा कुछ, and I have worked more on SQL and Python and all. So I felt कि हाँ मुझे भी कुछ अच्छा सा कुछ करना था ऐसा. And then I applied for this. I applied for this, and in this I have proper software role. So yeah, it's good for me. Okay, and which domains means आपने कौन से domains में वहाँ पे work किया? Means backend में पूरा पूरा work किया or anything or you explored the mode? एक्चुअली मेरी जो टीम थी इन गोल्डमैन इट वाज अ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड एनालिटिक्स टीम सो इन दैट व्हाट वी डू इज वी डिटेक्ट फ्रॉड ऑन द एप्लीकेशन लेवल फ्रॉड एप्लीकेशन टीम सो फ्रॉड एप्लीकेशन एनालिटिक्स क्या करती है कि किसी ने अगर अप्लाई किया तो वी डिसाइड कि उसको कौन से रिस्क कैटेगरी में रखना है सो वी डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर दैट मॉडल्स फॉर दैट बट द थिंग इज मेरी टीम मॉडल भी नहीं बनाती है मेरी टीम स्ट्रैटेजी बनाती है सिर्फ मॉडल दूसरी टीम करती है सो देर वर अदर इंटर्न्स हु वर वर्किंग ऑन बिल्डिंग द मॉडल बट आई डेवलप द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू विच द मॉडल शुड बी बिल्ड सो मेरा मोस्टली काम ऐसे था कि डेटा एनालाइज करो पूरा पूरा विजुअलाइज करो पॉइंट्स निकालो पाइथन में किया और मतलब पाइसपार्क में किया बेसिकली तो एसक्यूएल और पाइथन लगा था काफी कुछ बट देन मेरे मैनेजर को आई हैड टू और मतलब जो भी मैं मैनेजर को रिपोर्ट कर रही हूँ किसी को भी शो कर रही हूँ तो आई यूज एक्सेल टू एक्सप्लेन दैट वर्क आई डिड इन एसक्यूएल बट आई एक्सप्लेन इन एक्सेल तो वो था मेरा काम मोस्टली एंड देर वॉज नो डेवलपमेंट वर्क इन माई टीम एज सच मेरी टीम में नहीं था बट हाँ माई फ्रेंड्स वर्कड ऑन रिएक्ट ऑल्सो ऑन स्नोफ्लेक ऑल्सो देर वर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट वर बीइंग यूज्ड ऐसा Okay, means your experience in the Goldman Sachs was pretty hard and excellent. हाँ मतलब हार्ड तो है वहां पे थोड़ा कोप अप करना इट इज हार्ड यू हैव टू वर्क हार्ड तो है बट इट इज अ गुड कंपनी टू वर्क विद वेरी गुड एंड आप बता सकते हैं मीन्स आपने BN वायर मेलॉन का भी दिया था इंटरव्यू उसके इंटरव्यू राउंड बता सकते हैं
कैसे आपने मीन्स अप्रोच किया एंड हाउ योर रिज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड विद मीन्स कितने लोग हैं एंड आपका कैसे हुआ बता सकते हैं? So for BNY, I would suggest कि you cannot do anything. You have to pass the DSA only. Because एक तो वो अपने OT में कुछ भी नहीं पूछे थे, only DSA. सिर्फ 4 questions, not even why are you applying for this company. कुछ भी नहीं पूछा था. They just see your skill set first. Resume shortlisting बिना तुम्हारा CGPA देखे, बिना कुछ देखे हुआ था, only on the basis of your number of questions. List was according to the number of questions that were solved. आई एम टेलिंग यू वो पूरा स्कोर उनका ऐसे ही था जो हवा तो लगी जाती तो पता चल गया था कि किसने कितने क्वेश्चंस किए हैं उसके हिसाब से लिस्ट थी वहां पे और फिर मुझे पता चला कि मतलब वहां से एचआर ने पूछा था पर्टिकुलरली मेरे रेज्यूमे के बारे में कि कैन यू सेंड द फुल रेज्यूमे ऑफ दिस गर्ल हु इज फ्रॉम मैकेनिकल निशी अग्रवाल करके तो मेरे जो एक फ्रेंड है तो मुझे उससे पता चल गया था कि मेरा रेज्यूमे अलग से मंगाया है तो हो सकता है कि दे वुड हैव सीन द सीजीपी और कुछ भी उस फॉर्म में विच आई फील्ड व्हेन आई वाज अप्लाइंग सो वो था एक फैक्टर बट देन आई फील कि दे सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ marks you scored in the coding test and then it was interview और interview में भी I think they saw a lot of things not just if you are able to solve the questions in interview they saw that are you a BNY Mellon type of employee who would stay क्योंकि in BNY they believe that you once you join the company you should stay ओह एंड बाय द वे मीन्स आपने इतने मीन्स आपने कॉन्टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे फॉर द डीएसए एंड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हाँ या लीड कोड देन के आप मीन्स कॉन्टेस्ट दिए हैं काफी टाइम but I didn't do a lot of code forces and all I was not into competitive या मीन्स programming या मीन्स वही पूछ रहा था मीन्स आपने कॉम्पिटिटिव किए कि नहीं एंड आपने क्यों थोड़े मीन्स किए आपने हैं एक्सप्लोर किए हैं या हाँ I have not done a lot okay and what do you think about the means the code process or code shape for using means अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं then what do you think about the code process So I think your internet is lagging. Huh. See, what I would suggest is Code Forces and Code Chef and all are very good. If you are looking for companies like Google, Uber, and all, it would really, really help you a lot because I have friends who are doing this competitive coding and they got very good companies because of that because the questions will become very easy. बस एक चीज है कि पहले डीएसए कर लो थोड़ा फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाओ अगर यू गो ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग you might not be able to solve all the questions. डीएसए इज yeah इम्पोर्टेंट और इंटरव्यू भी निकालना है बट कॉम्पिटेटिव कोडिंग यू कैन डू अगर मजा आ रहा है तो बहुत सही है करो बिल्कुल करो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजकल देखने लगी और लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग तो या okay आपने आपने मीन्स ट्राई नहीं किया कभी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया है थोड़े टाइम तक किया है व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई डिड बट यही है कि मैंने कंटिन्यू नहीं किया है मतलब मैंने तब किए हैं कोड फोर्सेस पे भी किए हैं कोड शेफ में भी आई वाज द आउटरीच मीडिया लीड फॉर कोड शेफ इन माय कॉलेज ओके तो हाँ मेरे पास थे मैं हम लोग कॉन्टेस्ट बनाते थे बट देन वही है मैं ज्यादा नहीं की हूँ कॉम्पिटेटिव कोडिंग आगे ओके मीन्स यू वेयर इन मीन्स आप डेवलपमेंट में थे ज्यादा डेवलपमेंट एंड डीएसए डेवलपमेंट में आल्सो ज्यादा था हाँ हाँ आई वॉज मोर इन टू टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ बनाते रहना ऐसा okay and can you means आप बता सकते कि मीन्स वर्क कल्चर ऑफ बीएनवाई मेलॉन उसका कैसा है मीन्स उन कंपनी का आई टेल यू फ्यू थिंग्स यू कैन डिसाइड फॉर योर ओन जब मैं कंपनी में गई काम करने के लिए आई सॉ मेरी टीम में जो मिनिमम एक्सपीरियंस इंसान है उसको 12 years हो चुके हैं कंपनी में मतलब हियर वी आर विथ पीपल who are just here for 20 years 30 years very easily मतलब मैं जब ओरिएंटेशन चल रहा था टाउन हॉल हुआ एंड आई सॉ एक स्क्रीन पे धीरे धीरे करके लोग दिखा रहे हैं इनको 5 साल हो गए इनको 10 साल हो गए एंड एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर ईच ऑफ देम एंड दे डिस्प्लेड सम 50 पीपल उस टाउन हॉल में ऐसे स्क्रीन्स पे
और जिनको 25 एंड ऑल हो गया उनका बड़ा सा फोटो दिखाएंगे एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग, एवरीवन वाज एडमायरिंग। और सब सब लोग हर चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और people, when I ask people कि why are you not thinking about switching, why are you here for 10-15 years and all, so they are like all the opportunities that you need you will get here। एंड इनका Okay. बूमरैंग रेट सबसे ज्यादा है, पीपल विल लीव एंड कम बैक। सो देयर मस्ट बी समथिंग, नो? So in orientation, someone said कि once you work here, you will realize that there is no other place like this. Okay. Honestly, I did not expect this much in BNY, but it has been a pretty nice place to work in. For me, it is like I start my work at 11 o'clock in afternoon, like in morning. 10:30 or 11, I log in, and I usually log out around 7. हाँ, Okay. like I've never logged out after 7. मैं 7 o'clock कैसे भी करके, we have 3-4 hours of solid work each day. कोई भी कितना भी वो हो employee, mostly they have 4, 5 hours of solid work. Then there are some meetings, fresh, And like means and work life balance of the means both अच्छा है work life balance of means BNY and all. हाँ, work-life balance is good. Yeah, I'm telling you, no, it's good. Okay, okay, okay. Then we will stop here. So thank you, Nishi Agrawal. Means thank you, ma'am, for coming here and sharing your wonderful experiences. I will share your LinkedIn profile at my description. So thanks, ma'am, for coming here. Yeah, and if anyone wants to reach out for resources, for guidance or anything, I'm open to all and I would love to help. And I just signed up for this because I thought कि किसी को अगर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है, help होती है, then it will be really good. So yeah, Ma'am, you can reach out to me anytime. okay, ma'am, can you share your that, sheet SDH means वो sheet आपने बोले ना Yeah, DSA DSA sheet sheet. Yeah, I will you share after followed. this. I'll share it with you. You can forward it to all the Yeah, yeah. students. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you.